सबसे फर्स्ट, what is safety? It is condition which gives you freedom from hazards, risk, accident which may cause injury, damage, property loss and environment loss. What is hazard? Hazard is anything that can cause injury, illness, damage or loss. What is risk? Risk is the chance that a hazard may cause harm. Difference between hazard and risk. Hazard is the source of danger. Risk is the probability of harm from that hazard. What is accident? An accident is an unplanned, unscheduled, undesirable event causing injury, damage or loss. अगला क्वेश्चन है, what is incident? Incident is an unplanned event that may or may not cause injury. What is near miss? A near miss is an unplanned event that does not result in injury, illness or damage but had the potential to do so. What is unsafe act? Unsafe act is dangerous behavior by a person. What is unsafe condition? Unsafe condition is a dangerous workplace condition. What is PPE? PPE means personal protective equipment. Examples of PPE: safety helmet, hand gloves, goggles, safety shoes, full body harness and earplug. Why is PPE important? PPE protects workers from workplace hazards. What is full body harness? A PPE used to protect workers during height work. What is respiratory protection? Equipment used to protect from harmful dust, fumes and gases. अभी हम कुछ फायर रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे. सबसे पहला है, व्हाट इज फायर? फायर इज एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन. व्हाट इज फायर ट्रायंगल? हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन. टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स: वाटर, foam, CO2 and DCP extinguishers. Which extinguisher is used for electrical fire? CO2 type extinguisher. What is pass method? P, pull, A, aim, S, squeeze, S, sweep. What is fire load? The amount of combustible material present in an area. What is flash point? Lowest temperature at which a substance gives off enough vapors to catch fire. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉक ड्रिल? प्रैक्टिस एक्सरसाइज कंडक्टेड फॉर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस. व्हाट इज इमरजेंसी इवैक्यूएशन? सेफ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम डेंजर एरिया. व्हाट इज असेंबली पॉइंट? सेफ गैदरिंग प्लेस ड्यूरिंग इमरजेंसी. अभी हम लोग कुछ हाइट रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे. व्हाट इज वर्क एट हाइट? एनी वर्क वेयर अ पर्सन कैन फॉल एंड गेट इंजर्ड. व्हाट PPE is used for height work? Full body harness, safety helmet, lifeline and safety shoes. What is lifeline? A secured line used with harness during height work. What is scaffolding? Temporary structure used to support workers and materials during construction or maintenance work at height. What is green tag? Indicates scaffold is safe for use. What is red tag? Indicates scaffold is unsafe. What is toe board? Barrier used to prevent falling materials. What is guardrail? Protective railing installed to prevent falls. What is fall arrest systems? Systems used to stop a falling worker's safety. अभी कुछ confined space के बारे में questions देखेंगे. सबसे पहला है, what is confined space? Enclosed area with limited entry and exit. Examples of confined space जैसे chamber, tanks, pits, pipes, turbine, manholes, tunnels. Safe oxygen level 19.5% to 23.5%. What gases are checked in confined space? Oxygen, LEL, H2S and carbon monoxide. What is gas testing? Testing atmosphere before entering confined space. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वेंटिलेशन? वेंटिलेशन इज द प्रोसेस of supplying fresh air and removing contaminated or harmful air from a workplace. अगला क्वेश्चन है, what is LEL? Lower explosive limit.
What is standby man? Person monitoring workers during confined space entry. Why is confined space dangerous? Due to toxic gases, low oxygen and limited escape. अभी थोड़ा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला आता है व्हाट इज लोटो। लोटो मीन्स लॉकआउट एंड टैग आउट। वाई इज लोटो यूज्ड? to isolate hazardous energy before maintenance or repair work. What is electrical hazard? Danger caused by electricity such as shock or fire. What is earthing? Safe path for fault current. What is short circuit? Unwanted low resistance electrical connection. What is electrical isolation? Disconnecting electrical power safely. What is insulation? Material preventing electric current flow. Why is damaged cable dangerous? It can cause shock, fire and short circuit. अभी थोड़ा परमिट टू वर्क के बारे में हम सीखेंगे। What is PTW? PTW means permit to work. Purpose of PTW to control hazardous work safely. Types of PTW: hot work, cold work, confined space, excavation, electrical permits, lifting and shifting. What is hot work permit? Permit for spark or flame generating work. What is cold work permit? Permit for non-spark generating work. What is excavation permit? Authorization for digging work. What is height work permit? Authorization for work at height. Who issue permit? Authorized competent person. What is permit closure? Final confirmation after safe completion of work. Why is PTW important? It prevents accidents during hazardous job. अभी हम लोग हीरा के बारे में थोड़े क्वेश्चन देखेंगे। What is HERA? Hazard Identification and Risk Assessment. Purpose of HERA to identify hazards and control risks. Steps of HERA: identify hazards, assess risk, apply controls and monitor. What is risk assessment? Evaluation of hazards and risk. What is residual risk? Remaining risk after controls are applied. What are control measures? Action used to reduce risk. What is hierarchy of control? Elimination, substitution, engineering control, administrative control and PPE. What is severity? Seriousness of possible injury or damage. What is likelihood? Chance of accident occurring. Why is HERA important? It helps prevent accidents before work starts. अभी थोड़ा HAZOP के बारे में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले आता है व्हाट इज HAZOP? Hazard and Operability Study. Where is HAZOP used? Oil and gas, chemical plants and refineries. Purpose of HAZOP to identify process hazards, deviations. अभी हम लोग कुछ ऑडिट और इंस्पेक्शन के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज सेफ्टी ऑडिट? सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी सिस्टम्स. टाइप्स ऑफ ऑडिट: इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट. व्हाट इज इंटरनल ऑडिट? ऑडिट कंडक्टेड बाय कंपनी टीम. व्हाट इज एक्सटर्नल ऑडिट? ऑडिट कंडक्टेड बाय आउटसाइड एजेंसी. व्हाट इज सेफ्टी इंस्पेक्शन? चेकिंग वर्कप्लेस फॉर अनसेफ एक्ट एंड कंडीशंस. Difference between audit and inspection. Inspection checks site conditions. Audit checks complete safety system. What documents are checked during audit? Permits, training records, inspection records and reports. Purpose of inspection to identify and correct hazards. What is safety observation? Watching work activities to identify unsafe behavior. Why are audit important? They improve compliance and safety performance. अभी कुछ हम एक्सपीरियंस बेस्ड एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है व्हाट विल यू डू इफ वर्कर रिफ्यूज पीपीई? मतलब आप क्या करेंगे अगर कोई वर्कर, कोई एम्प्लॉय अगर पीपीई रिफ्यूज कर रहा है। एक्सप्लेन हजार्ड्स पोलाइटली एंड स्टॉप अनसेफ वर्क इफ नीडेड। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट, सिक्योर एरिया, कलेक्ट एविडेंस, आइडेंटिफाई रूट कॉज एंड करेक्टिव एक्शंस. हाउ डू यू इम्प्रूव सेफ्टी कल्चर? मतलब हम लोग सेफ्टी कल्चर कैसे इम्प्रूव करेंगे? ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन एंड वर्कर इन्वॉल्वमेंट. मैंने आपको बोला एम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल यू डू ड्यूरिंग इमरजेंसी,
raise alarm, evacuate people, and coordinate response. What is toolbox talk? Short safety discussion before work starts. What is JSA? Job safety analysis. What is root cause? Main reason behind accidents or incident. अभी सबसे मेन क्वेश्चन, why should we hire you? Because I am responsible, eager to learn and committed to workplace safety. अगला क्वेश्चन है, व्हाट लीडरशिप क्वालिटीज शुड अ सेफ्टी ऑफिसर हैव? मतलब सेफ्टी ऑफिसर में कुछ बेसिक कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग. द लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सेफ्टी ऑफिसर? टू प्रोटेक्ट वर्कर्स एंड क्रिएट अ सेफ वर्कप्लेस इन्वायरमेंट.